प्रसाद लेके ही प्रस्थान करेंगे। और हमने पहली बार ऐसा देखा, अभी हम प्रयागराज में आरती के लिए मारामारी हो जाती थी। महाराज हम आरती करेंगे यहाँ तो बुलाने बाद भी ऐसे समझे जैसे लगता है कि हम किसी के घर में चोरी करके पीछे खड़े हैं, कोई देख नहीं। आरती करने के लिए एक बड़े रवि जी का कार्यक्रम, सभी लोग आरती करने के लिए और आरती और प्रसाद के लिए तो हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, चाहे हम जिस उसमें हों। इसलिए सभी लोग आरती और प्रसाद ले करके और हमेशा कहीं भी कथा में जाओ, किसी भी उसमें हमें आरती करने को भागवत जी की मिले, भागवत जी की आरती करने को मिले, हमें प्रसाद मिले। अगर नहीं कोई नहीं भी कहा तो हमें आगे पहले जाना चाहिए। ये हमारे शास्त्र का नियम है। सभी लोग आरती और प्रसाद ले करके और चलते चलते लोग सुंदर भजन श्रवण करते हुए और बिना आरती प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। और सभी लोगों के आरती प्रसाद राम जवन जी, अरे रवि जी, आप सभी को प्रसाद की व्यवस्था और पंडित जी प्रसाद देखिए बाबा महाकाल के साथ यहाँ पर ठाकुर जी मिला अरे आपको सभी लोग मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम
शिवा के बिहारी लाल की, सदगुरु भगवान की, शिव महापुराण की। कल इस पवित्र आंगन में कुछ गुरुवर के पवित्र मुखारबिंद से शिव महापुराण के पावन कथा को आप हम सभी श्रवण करेंगे। सभी समय पर पधारें, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कुछ गुरुवर के पवित्र मुखारबिंद से शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण करें। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। देखेंगे जो प्लान बनेगा ठीक है।